Hello, good evening. I am I. Bilal from Ellen Mishra College of Business Management, Muzaffarpur. In this session, we shall learn about RC4 stream cipher algorithm. Before going into details of RC4 algorithm, we should have a quick look on stream ciphers. In stream cipher, what we found that the plain text bits and the secret key bits, okay, both here XOR, and after XORing this produces ciphertext. Okay, plain text bits are input and key stream bits are input. That here XORs and produces ciphertext. That at the recipient end, when reaches, the ciphertext bits are XORed with the key stream bits, producing the plain texts. This happens in stream ciphers. Now what happens in RC4 algorithm, that key bits are given by the user, and this key stream enters into here RC4 algorithm. We can see here the secret key is input that enters into RC4 algorithm, and these key stream bits XOR with the plain text bits and produces the encrypted text or ciphertext. So this makes difference with the streams general stream ciphers. Okay, so RC4 algorithm is a byte oriented operation, variable length key size and byte oriented operations. The entire algorithm rests on the use of a random permutation. Okay, जो पूरा algorithm है इनका RC4 का, वो पूरा डिपेंड करता है use of random permutation, and this is very strong, particularly in net services, internet services. This was first designed by Ron Rivest in 1987 for RSA security, and hence after his name, the name has been given Rivest cipher. RC means R for Rivest and C for cipher, or some people also call Ron's code. So RC4 algorithm, and the proposal of RC4 was first published in 1994. It is also a generalization of one-time pad, meaning thereby, if we recall the Shannon notion of perfect secrecy, one-time pad means the keys are generated only once, and that one is not regenerated. That makes the security aspect very strong. Okay, and another advantage of this algorithm is that it runs very quickly. And cryptographically it is very strong and easy to implement. Okay, it uses random permutation and a secret key which are wiped out immediately after the use, for the sake of security, for the sake of threat of attacks. So the initial key and the initial permutations are wiped out. Okay, so it is initialized, the algorithm is initialized by a short key, with a short key that is extended to, that is used for generation of long key streams. Okay, normally it uses 64 bits or also 128 bits. Most popularly it uses 64 bits. Keys have pseudo-random property, and key stream is used like one-time pad. Now the RC4 is basically used in HTTPS services, hypertext transfer protocol services in the internet services, in SSL, secure socket layer, transport layer security, that is TLS, between web browsers and servers,
IEEE 802.11 wireless LAN standard, like WPA Wi-Fi protocol access, and wired equivalent privacy. It is also used in Microsoft point-to-point encryption, BitTorrent protocol encryption, remote desktop protocol, and optionally it is also used in Kerberos. So this is the block diagram of RC4 algorithm. The secret key is given by the user, which is agreed upon also by the receiver. As it is symmetric key encryption, the sender and the receiver have to use the same secret key. Okay, now from this short length secret key, in RC4 algorithm, long keys are generated. The keys in the form of key streams. Now the bits of this key stream and the bits of plain text. Okay, of course the operation is byte by byte. For 1 byte, the bits of 1 byte and the bits of key stream get XORed here, and a ciphertext is produced that traverses through transmission channel. And at the recipient end, this encrypted text, that is a ciphertext bits, again XOR with the key stream bits that is generated again through the RC4 algorithm using the same secret key as the sender. Okay, so this is the entire block diagram working of RC4 algorithm. Now if we look into the RC4 algorithm, it completes in two parts, two phases. One is key scheduling algorithm. First phase is key scheduling algorithm, also called KSA, and the next phase is PRGA, pseudo random number generation algorithm. Pseudo random number generation algorithm. Okay, so in KSA what happens? A state vector, state array S is generated using the secret key given by the sender, given by the user. Okay, state array or a state vector S is generated, and the output of this KSA becomes input to the PRGA, pseudo random number generator algorithm. The pseudo random generator algorithm generates a key stream. In KSA, user gives inputs the short length key, and from that short length key this S array is generated, and from S array a temporary vector, from S vector temporary vector T is generated, and that temporary vector T enters into PRGA. Okay, so in PRGA key streams are generated. Those key streams are XORed with the key stream with the message bits to generate encrypted streams of bits. फिर से समझते हैं, ये RC4 दो फेजेस में कंप्लीट होता है. RC4 का एल्गोरिदम दो फेजेस में कंप्लीट होगा. एक होगा KSA, की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें यूज़र सीक्रेट की इनपुट करेगा और उस सीक्रेट की सहायता से ये स्टेट वेक्टर और S वेक्टर जनरेट होगा. ठीक है, उसका फिर परम्यूटेशन करेंगे, उससे फिर हम लोग एक टेम्पररी वेक्टर T जनरेट करेंगे, और वो T वेक्टर जो कि टेम्पररी वेक्टर है वो एंटर करेगा PRGA में, स्यूडो रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिदम में एंटर करेगा. और जब वो एंटर करेगा तो वहीं पर की स्ट्रीम जनरेट होगा PRGA एल्गोरिदम में. और जब की स्ट्रीम जनरेट हो जाएगा तो वो की स्ट्रीम बिट बाय बिट, ऑफ कोर्स इन बाइट ओरिएंटेशन, बिट बाय बिट प्लेन टेक्स्ट मैसेज से एक्सॉर करेगा और साइफर टेक्स्ट बनाएगा. यही साइफर टेक्स्ट फिर ट्रांसमिशन चैनल में से होते हुए रिसीवर एंड तक जाएगा
और फिर इसी एल्गोरिदम के रिवर्स में काम करेगा। तो हम इसका डिटेल देखें। की स्ट्रीम जनरेशन के लिए, फॉर की स्ट्रीम जनरेशन द साइफर यूजेज अ सीक्रेट इंटरनल स्टेट that consists of two parts. Okay, one is a permutation of 256 possible bytes in state vector S. This is initial vector. Okay, and after the use it is thrown out. It is not used for the sake of secrecy. Okay, दूसरी बात इसमें यह है कि we use two 8 bits index pointers. दो 8 बिट इंडेक्स पॉइंटर्स यूज करते हैं, और वो कौन है? I और J. ओके, 2 8 बिट्स इंडेक्स पॉइंटर्स, that is I and J. So we see here a secret key, of course, it is agreed upon by both sender as well as recipient. It is used to initialize the process, and it permutes the state vector S, okay, which is done in 2 steps using 2 index pointers I and J. We shall see here. So this is I index pointer and this is J index pointer. Okay, so after entering the secret key by the sender जो secret key दिया उसकी सहायता से अब हम यहाँ पर आगे का काम करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले एस वेक्टर को तैयार करेंगे जो कि 256 सेल्स का होगा। एक एस वेक्टर या एस एरे जनरेट करेंगे जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 256 होंगे, राइट। और उसमें हम करते क्या है कि आई का वैल्यू 0 से इनिशिएट करा के 255 तक ले जाके लूप में चलाते हैं, यानी 256 बार 256 टाइम्स ये लूप चलेगा। And every time the value of I changes, which is assigned to S of I, right? Every time after the initialization with the value 0, the loop continues up to the value 255, means 256 times. And in every loop, the value of I changes from 0 to 1, 2, 3, 4 and up to 255. The value of I is assigned to S of I. So S of 0 becomes 0, S of 1 becomes 1, S of 2 becomes 2. We can see here S of 0 is equal to 0, S of 1 equal to 1, S of 2 equal to 2. This is because we assign the value I to S of I. तो इनिशियल वेक्टर जो हमारा जनरेट हो रहा है S of 0 से लेके S of 255 तक, उसमें वैल्यूज स्टोर होंगे 0, 1, 2, 3 से लेकर के 255 तक। क्लियर है? नाउ फ्रॉम दिस S of I, this I, we shall generate another temporary vector T. Okay, T of I is equal to K I mod length of K. K जो की है array of bytes of secret key, K क्या है? array of bytes of secret key of I mod की लेंथ। अगर की लेंथ 4 है तो यहाँ वैल्यू 4 हो जाएगा, अगर की लेंथ 8 है तो यहाँ वैल्यू 8 हो जाएगा। ओके, और फिर ये जो कंप्यूट होगा दैट वुड गिव द array element, the element of K. Okay, say if suppose this computes to 4, so it would be K4, right? And now this Ti will enter into this another loop. Okay, for the index pointer j. Initially j is assigned 0, then I again continues for 256 times from I equal to 0 to 255. Okay, for I is equal to 0 to 255, do j is equal to the value of j plus s of I, that is taken from here, s of I, plus t of I, that is taken from here, t of I. Now it undergoes modulus operation with 256. So j is equal to j plus s of I plus t of I mod 256.
Now these values s of I and s of j is swapped. Okay, the values of s of I and s of j are swapped. ठीक है, अब जब ये k से कंप्लीट हो गया तो इनपुट की और टेम्पररी वेक्टर t अब यूज नहीं होगा, काम खत्म इसका। और ये ऐसा किया जाता है कि अपोनेंट्स को की पता न लग सके या इनिशियल वेक्टर का पता न लग सके। हम लोग पढ़े हैं वन टाइम पैड में या स्ट्रीम साइफर में कि अगर अपोनेंट को साइफर टेक्स्ट मिल भी गया, साइफर टेक्स्ट अगर हाथ लग भी गया, तो अपोनेंट is not capable of decoding it into plain text, है ना। शैनन नोशन ऑफ परफेक्ट सिक्योरिटी में हम लोग ने देखा था कि if the ciphertext is known to the opponent, it is very 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 difficult, rather impossible for the opponent to get the plain text only having the ciphertext. So what opponents need here? Opponents need here key. So opponents always remain in search of the keys. Okay. और शैनन नोशन ऑफ परफेक्ट सिक्योरेसी में वन टाइम पैड का मतलब क्या है कि एक बार जनरेट हो गया दोबारा जनरेट नहीं होगा, उसी प्रिंसिपल पर ये चलता है। इसलिए जो इनिशियल सीक्रेट की है और जो इनिशियल वेक्टर है ये एस आई, उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इस केसे का आउटपुट अब कहाँ जाएगा? PRGA में यूज होगा, राइट। आउटपुट ऑफ द केसे इज यूज्ड इन PRGA. Okay, this goes to PRGA. अब ये है PRGA, pseudo random generation algorithm. Here what do we do? I is equal to j is equal to 0. That is, we initialize I and j with 0. I equal to 0, j equal to 0. Now we have number of bytes of the plain text, 1, 2, 3 and so on. So this loop has to continue for all the bytes. Suppose a plain text message has 10 bytes. Okay. Now these 10 bytes have to be decoded. So one by one, for every byte, this loop would continue. So if we have 10 bytes of plain text message, this loop would continue 10 times for every byte to be encrypted. So it is written here, while bytes remaining to encrypt, I is equal to I plus 1. Initial value of I is 0. So initially I would be 0 plus 1. Modulus operation 256. I plus 1 mod 256. Now here j, value of j changes. J is equal to j plus s of I mod 256. So this changes the value of j, this changes the value of I. Now the value of s of I and s of j are swapped. Means value of s of I becomes the value of s of j and value of s of j becomes the value of s of I. Now both are added, summed, right? S of I और s of j को यहाँ sum कर दिया गया and then mod 256. Now this generates the key, right? This generates the key. So this value of k becomes the element of state vector s. So suppose this computes the value as 5. Okay, this computes the value of 5. So k becomes 5. Now what happens here? Value of k is put 5, s5. Meaning thereby in the location s of 5 in the s array, we have to go to the location s5. Okay, and from there we have to get the value from that location, and that value, that bits XOR with the bits of plain text message mi. Is it clear? This gives the value of k. Now that value is used in a state array. So if it is 5, then we have to go to S5 location. S is an array, S is a vector, S0, S1, S2, S3, S4, S5. And from S5 location, take the value bits and then XOR those bits with the plain text bits. And that would give you the ciphertext bit, CI. Okay, so this is
the key generation. This is important. This is the key generation, and this is encryption or decryption at the recipient's end. So what happens actually, we can see here, this is S of I and this is S of J. We swap here. Okay, this is S of I. यहाँ देखें, ये इतनी दूर की बात है ये. तो S of I और S of J को हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं. So we can see here S of I is the value here, S of J is the value here. Now these values are swapped, है ना? Okay, the S of I becomes the value of S of J and the value of S of J becomes the value of S of I. Now these are added. These are added to compute the value for X, and that one is put here SK. Okay, so suppose it is 5, it means S5. So we have to go to location S5, this location 0, S0, S1, S2, S3, S4, S5, and from this cell we have to extract the value, we have to take the value. Okay, this value is bits of key. These are the bits of key stream. Now these bits would encrypt with the plain text bits. Okay, so this is all about the story of RC4. Okay, फिर से हम लोग एक बार देख लें. KSA में क्या होगा, 0 to 255 I का चलेगा इंडेक्स. ये SI इनिशियल वेक्टर जनरेट करेगा S वेक्टर में, और S0 से लेकर के S255 तक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा. S of 0 इक्वल टू 0, S of 1 इक्वल टू 1, S of 2 इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. और यहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्पररी वेक्टर जनरेट कर लेते हैं. ये टेम्पररी वेक्टर का वैल्यू कहाँ चला जाता है, J इंडेक्स पॉइंटर वाले में. यहाँ पर I और J, I लूप चलेगा 0 to 255 यानी 256 टाइम्स, और यहाँ पर J का वैल्यू हम बदलेंगे. इसमें यूज़ करते हैं S of I के वैल्यू को और T of I के वैल्यू को, और मॉड कर देते हैं, सम करके मॉड कर देते हैं 256 से, और फिर यहाँ पर S of I और S of J के वैल्यू को स्वैप कर देते हैं. अब यहाँ जब आते हैं तो I का वैल्यू 0, G का वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं इनिशियली, और सारे बाइट्स के लिए ये इतनी दूर लूप चलेगा. जब तक बाइट बाकी है तब तक ये लूप चलेगा, और इस लूप में I का वैल्यू चेंज करते हैं, J का वैल्यू चेंज करते हैं, फिर उसको स्वैप करवा देते हैं. स्वैप कराने के बाद दोनों वैल्यू को सम करके उसको मॉड करवा देते हैं. ठीक है, 256 से, और जो वैल्यू आता है वही SK में वैल्यू चला जाता है. SK का वैल्यू हो गया, और यही जो वैल्यू होता है वो बिट्स ऑफ की स्ट्रीम होता है, की स्ट्रीम बिट्स. और फिर वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज बिट से क्या करता है, एग्जॉर कर जाता है, वही साइफर टेक्स्ट होता है. फिर जब ये रिसीवर एंड पर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये साइफर टेक्स्ट फिर इन्हीं बिट्स के साथ डिसाइफर एग्जॉर करेगा, एग्जॉर करके प्लेन टेक्स्ट देगा. तो इस को निकालने के लिए फिर यही सारा एल्गोरिदम से इसको पास करना होगा, यानी सेंडर को भी वही की सीक्रेट की यूज़ करना होगा इनिशियली, जो रिसीवर को वही यूज़ करना होगा की सीक्रेट की जो कि सेंडर ने यूज़ किया था. ओके, और वही इनिशियल वेक्टर जनरेट होगा जो सेंडर एंड पर हुआ था. उसके बाद की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, और अंत में ये डिक्रिप्ट होकर के प्लेन टेक्स्ट मैसेज दे देगा. तो सिंपल सा ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन यूजेज सम सीक्रेट की एंड स्टेट वेक्टर, सेम सीक्रेट की एंड स्टेट वेक्टर, generates key stream by running the KSA and PRGA. Now those key streams are XORed with the encrypted text to generate the plain text. So we can see here कि ये M XOR C gives the plain text message M, because this C and this C gets cancelled, leaving plain text message M. Okay, so this is all about RC4. I think it would have become clear. So तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.